Winter in Calcutta is associated with many things, one of them being the Tibetan market set up annually near Wellington Square. From November, this stretch of road is adorned with brightly colored woolens of all types, shapes and sizes. Though initially these garments were hand-woven, they are now mostly machine-made. Although most shops, stalls and malls all over Calcutta display winter wear during this time of the year, yet there's a speciality attributed to this age-old market because of it being one of the oldest winter garments fair that Calcutta has been hosting for many years. Selling a wide variety of woolens at very reasonable prices, they are a hit with middle-class customers and youngsters. थोड़ा बताइए ना, आप यहाँ से क्यों खरीदते हैं? अभी यही दुकान है, यहीं पर आके खरीद लेते हैं। अब कितने साल से आप आ रहे हैं यहाँ पे? हमारा तो घर ही यहीं है। यहाँ सब आते हैं, क्वालिटी मिलता है, वैरायटी है। अच्छा, आप कितने साल से आप खरीद रहे हैं? फर्स्ट टाइम आफ्टर माय मैरिज। It is organized by the Tibetan Refugee Sweater Sellers Association. What once started with a few stalls now stretches along the entire road. One of the stall owners tells me that the government now provides them with permanent electricity. While they spend November to January in Calcutta, the rest of the year they do odd jobs. अभी तो हम लोग ये छठा गली में रहते हैं ना, ये अभी दूसरा साल हो रहा है। अभी यहाँ से दूसरा जगह जाएगा ना, मतलब ये बनारस साइड में जाएगा, भट्ठा में ईटा बनाएगा। हाँ बताइए। ऐसे तो गाड़ी उड़ी भी चला लेते हैं, फिर लाइसेंस नहीं है ना, इसीलिए मजदूरी में थोड़ा करना पड़ता है। यहाँ से जाएगा तो यहाँ तो हम लोग बाहर से कितने स्टॉप है, दूसरा कितने स्टॉप है, जीन्स पैंट और पीटी गंजी, कोलकाता में स्वेटर। But there is more to these smiling and friendly people. They are a displaced nation. They are actually Tibetan refugees settled in states like Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Karnataka and Sikkim. Tibet has been under the effective control of China since 1951. In 1959, during the Lhasa uprising, when China's military cracked down on Tibetan rebels, a full-scale resistance spread throughout Tibet. Fearing the capture of the Dalai Lama, the religious head of the Tibetan Buddhists, unarmed Tibetans surrounded his residence and the Dalai Lama fled to India. The government of India accepted the Tibetan refugees. India designated land for the refugees in the mountainous regions of Dharamsala, where the Dalai Lama and the Tibetan government in exile are now based. Following the footsteps of the 14th Dalai Lama, more than 150,000 Tibetan refugees have fled to India during the past 50 years. मेरा मम्मी वैसे तिब्बत से आया है। अच्छा। तिब्बत से आया है। हम लोग का जो तिब्बत जब चाइना के अंडर गया है, उसी वक्त से मेरा मम्मी तो वहीं से है, बचपन से आया है। कोई को तो यहीं पे पैदा, हम लोग तो यहीं पे पैदा हुए, इंडिया में पैदा हुआ है। These people have desperately tried to keep their culture and ethos alive. Tibetans have built monasteries, schools and hospitals and founded the Tibetan Library of Works and Archives, all aimed at continuing the Tibetan tradition and culture. Tibetan festivals such as the Lama dances, celebration of Losar or the Tibetan New Year and the Monlam Prayer Festival continue in exile.
It has been 50 years since the Dalai Lama and the Tibetans have had to flee from their country, but they still long to go back to the motherland. हाँ करता है, हम लोग का प्रोटेस्ट होता है, जैसे कि 30 मार्च में हम लोग का यही होता है, प्रोटेस्ट करता है। उसमें जैसे कि कभी कभी अपना जैसे चाइना में कुछ हो जाता है ना, उस वक्त हम लोग फिर दोबारा प्रोटेस्ट करता है। जैसे पिछले साल को बहुत सारा वहाँ टिबेटन को चाइना लोग ने पकड़ के मारा, ऐसे किया है, उसकी वजह से भी हम लोग करता है। Throughout the year, there are protest rallies, demonstrations and marches against the Chinese government's occupation of Tibet. It is a daily struggle for them. Every garment they make has a tag which pleads, "Save Tibet." What will happen to these people who dream of a homeland on which most have never even set their eyes on? Will they one day be able to go where their hearts are? Or will they be here once again, setting up stalls and selling people woolens for the winter of Kolkata? होप तो है, उम्मीद से तो दुनिया कायम है।